as we speak, congratulatory messages have already started pouring in from across the globe. This is the US statement that is coming in, congratulating Modi 3.0 government that is set to be formed. Matthew Miller, the US State Department spokesperson, who says, and I quote, "The election results have not been finalized, so we will wait for the finalization of those election results before we offer any definite comment. But this is important for us, and what we've seen over the past 6 weeks is the largest exercise of democracy in history as the Indian people have come to the polls." Listen in to that statement coming in. Over the past 6 weeks is the largest exercise of democracy in history as the Indian people came to the polls. And on behalf of the United States, we want to commend the government of India and voters there for successfully completing and participating in such a massive electoral undertaking. Well, whereas the NDA has secured a straight third term, and it is for the first time since 1962 that a government has been elected 3 times in a row, Samiksha. Well, that's right, Guinea, and to add to that, while the NDA has fallen short of that 400 par target, the challenge for the NDA at this stage is to keep its allies together. The BJP has secured a simple majority, albeit way short of its 400 par goal. रुझान तो ये स्पष्ट है कि जिन लोगों ने खर्च का महाउत्सव मनाया था 3 दिनों तक, आज वो सन्नाटे में पड़े हुए हैं। कुल बीजेपी की अपनी सीट 230-32 पे जा रही है, बहुमत से अभी भी दूर हैं। और अगर मैं चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी को और यहाँ जेडीयू को थोड़ा विलग कर दूं तो मेजॉरिटी भी नहीं है, तो जाहिर है वो 400 पार का गुब्बारा फट गया। The bugle of 400 par was sounded by the Prime Minister. The prevalent Modi wave made it seem a record-breaking possibility. Pran Pratishtha in Ayodhya. Several interviews. But the 400 par call has not resonated with the voters. देखिए, ये तो एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल थोड़ी है। ये तो 4 तारीख को मालूम होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए, एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल नहीं मानना चाहिए। आई को हटा के ये लगा देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर मतलब क्या रह गया चुनाव का। 2004 में भी इसी तरह के एग्जिट पोल दिखाए गए थे जो एग्जैक्ट नहीं हुए थे। अगर ध्यान करेंगे तो सारे एग्जिट पोल में 2004 में बहुत ज्यादा सीटें दिखाई गई थी बीजेपी को, 2009 में भी दिखाई गई थी, बावजूद वो सत्य से परे थे। तो हम समझते हैं अभी एग्जिट पोल की बात आई है, एग्जैक्ट पोल को आ जाने दीजिए। 4 तारीख की बात है, 3 दिन और बचे हैं। The exit polls too did not exactly predict 400 plus, but even the projected 350 could not be met. 300 par looked difficult for the NDA till 3 p.m., let alone the BJP. In Uttar Pradesh, NDA secured 35 out of 80 seats, suffering an unprecedented setback. Meanwhile, the Indi secured 44 out of 80. On the other hand, BJP dominated Madhya Pradesh, Odisha, Rajasthan and more. The dip in NDA numbers and Indi's 200 par has extended the elections. 400 par has failed. Alliance politics is back.